Friends, we have Ashish Sharma on our show today. The reason why he's so special is because all of us have experienced watching beggar kids, from sniffing drugs, picking food from a trash can. And it has made our stomach churn, but we have not been able to do anything about it over the years. So that makes our guest really special because at 28, not only is he thinking of their welfare, but he actually has concrete steps how to handle the situation, handle the problem of child beggars on Indian streets. And not only does he have a plan, he has actually started implementing it by deciding to walk across India, about planning to cover about what 17,000 miles, is it, Ashish? Yeah, 17,000. Yeah, 17,000 kilometers. Yeah. Yeah, and so far he has completed about 9,904 kilometers plus another 40 kilometers since morning today. And For today. he's been walking for 13 months. And the reason why he says he needs to do is because nothing can be achieved without passing the test of fire, which he very well intends to do. In the meantime, he and his friends are working on a bunch of mobile apps with which the problem can be eradicated. And he is convinced that Delhi will be child beggar free by October 19. This is an ambitious plan which can definitely be replicated throughout the country. Let's hear from him how he intends to do it. So welcome to our show, Ashish. Jai Hind. Yeah. Jai Hind. It's amazing how at 28 you're thinking of, old age and of beggar children instead of parties and dating. It's so amazing. What exactly happened which caused this shift in you and you embarked on this journey? Like I was having a very normal job routine and everything, like a normal engineer used to have. And one day I just met a kid who was highly drug addicted, and he was just 9-year-old kid who was notching his arms with the nails. So this is the reality of India after 72 years of independence, that the childhood of India is not happy. Somewhere he touched me, he was asking money and all, but I just offered him a food only. But the next other day, I again met him. So it was like why I was studied and I was doing all these things. It took almost 3.5 months for me to rescue that kid from the red light and take him to the school. But this journey didn't stop here. I rescued 8 more kids from different parts of Delhi. And I did the same thing. I used to go to nearby NGO, ask them the process and send them to a school. But when I rescued the 9th kid, the only question in front of me, it was like, maybe I will die. But like this, I won't be able to send each and every kid to a school. So here the life changes. So why we are doing this with social work, why the government is not doing their work and all. So when I started this work and all, I had to go into the depth of these issues and everything. And I did it in my own way. I left my job after 1 year. And then I was like, it's okay. So I tried to go to the grassroots, like what is the basic cause and how we can cure it. So I tried to find the solutions and everything within 8 months. So in those 8 months, first of all, I tried to think why we are lacking in India. Like from last 72 years, we are fighting for a number of causes. Like you are fighting for some other cause, we are fighting for another cause, and someone is fighting for another cause. But why we are not putting our impact together, that the particular issues getting irritated from the India. So this more fight is more to irritate an issue and not to cure it. Like why we are thinking to cure or why we are thinking to control the issue. When being an Indian or being a citizen. Let me interrupt you here. Like at this age, mostly even when we are older, we see we see beggars all the time. But we are not touched enough to do something about it. But you were, and what made that in you? Why were you not thinking of a job, a marriage, about dating, about parties? Instead of that, you were thinking about this. What makes your journey so different? So it's more over like when a family member falls sick in a family, we don't stay happy. Either it's my mom, dad, or it's my brother. If they're falling sick, I can't stay happy. But the childhood of India is not exactly happy even after 72 years of independence. Then why we are happy? At one point we say India is our country, India is like brother, sister, like but when these rules are coming and when the rights are coming, why we are thinking not in that way? So this is the question to me,
If the childhood of my nation is not happy, why I'm just laughing, why I'm just happy, and why I'm taking this much like I'm enjoying my life, party kar raha hu, and I'm doing all these certain processes. But at certain point, the main trend is like from last 70 years, your Indian childhood is not happy. Like a number of Right. times, I like when I'm not making any complaint. To me, when I started this movement, this one thing was very clear to me: I will not make any complaint to anyone. If I have to do something, I have to make it anyhow. So this was the only thing that I tried to start working all alone. But I just tried to test me in each and every aspect that how I can bring a change. So this movement I designed in a psychological aspect. That if we can bring a psychological change in India, then we can fight to anything in one go. You So also when I mentioned in left a my job, conversation. I find out. You also Okay. You also mentioned in a conversation with Mm-hmm. me that we have been just postponing this issue over several generations and not really doing anything about it, Mm-hmm. and that we should not be doing social Yeah, like. work. We should be Mm-hmm. hitting out at the root Mm-hmm. of the problem. Mm-hmm. Yeah, like there are 32 lakh NGOs. Like if we talk about the registered NGOs and the thing they are doing, but after 32 lakh NGOs also, we are having a number of issues around us. So expect polio. Expect polio. I never seen any other issue like we have tried to control it or we are irritated completely. So where are we lacking? Either it's a willpower or we don't want to irritate the issue. So the only thing that in my mind when I started this campaign, like either anyone is going to accompany me or not, but I have to give my 100% output before going back to my home. So we divided this entire campaign in three different parts. First, there was a system that we were in hell of required. Like lakhs, millions, crores of rupees are getting invested just to make people aware through different mediums. And there are more than 187 departments, government departments, and each and every department is like spending another amount just to aware more and more people. And after that, what is happening? We are not able to quit smoke, tobacco. The schemes are not going to the needy one. The farmers are getting died. So the only first thing I have realized is we are not having a common awareness tool. Like if government is launching something, I just want that particular message is going to each and everyone. This is the first thing that should happen in India. If today anyone is saying anything, this should be get to each and every home anyhow. So I tried to develop that mobile application. So my two friends are in Google who are trying to help me out. So we are integrating 7,800 zones. So they are the like modern villages. And the entire concept I have taken from the Sanatan Dharam and after the old like जो हमारी generation से सिखाया था. So at earlier age or the few years back, we used to have small villages. The concept of small village, it was like give people strength, give people unity. If 2 kilometer के अंदर 5 kilometer something is happening, people are all together. But what is happening now? We have forgotten. आपके सामने घर वाले की नाम पता हमें पता नहीं होता है. Like who is still staying in front of our. So this is a life that we have made. तो हमारी भारतीय संस्कृति ये रही नहीं है. तो इस पूरी मोबाइल एप्लीकेशन को we try to develop in such a way कि हमें अपनी संस्कृति को भी लेके जाना क्योंकि this is our responsibility कि we should have the real संस्कृति of भारत now in us. So I started the concept of walking in this. इसमें हम लोगों ने दिमाग लगाया कि what was the reason कि क्या ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती है. So when we will start walking, the entire India will start walking. Actually, we are talking to the nearby people. We are again having a conversation. And in between, you will find out कि जिनके माँ बाप दूर रहते हैं, we are talking to them. At least हमें अपने रूप में अपने माँ बाप मिल रहे हैं. And in us, they are finding their own son and daughters. The same way, जो दादा दादी हैं, they are not having like उनसे बात करने के लिए किसी को टाइम ही नहीं है. So where we are heading right now, we are just busy like drink, smoke, tobacco. 2 दिन की छुट्टी होती है Saturday and Sunday night. We are just movie देखना, chill मारना सब कुछ है. But who is actually doing anything on the ground level? We are just making a complaint. आज भी वही कंप्लेंट चल रही है 72 साल पहले की. आज भी वही कंप्लेंट चल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही. But what we are doing? निर्भया कांड के बाद हुआ है, उसके बाद भी रेप हुआ. But no one is actually thinking कि उसका सोल्यूशन सिर्फ ये था कि हाई कोर्ट अपनी तरफ से मॉरल एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने की हिदायत देती that each and every office and each and every premises of any particular area कहीं पे भी उन लोगों को बताया जाता है कि your conscience is this. पढ़े लिखे लोग रेप कर रहे. This is what is happening right now. ये मॉरल एजुकेशन सिस्टम को धीरे-धीरे. So you're developing a app to develop more community awareness.
Yeah, this app will do everything in coming days, but right now we are just focusing on the child bagging only. So we have integrated department like schools, hospitals, college, NGO, rehab, police station, DM, ministry, app authority. Like if I'm going into a slum area and I'm trying to teach those kids, it's not my job. I should reach the CEO, Chief Education Officer, or either the DM, District Magistrate, and ask him why he's not going to a school. This is my right to ask a question to him. But while we are taking the government work in our hand, so government indirectly वो सारा भंडा हमारे ऊपर फोड़ देती है कि these NGOs are not doing anything. But the NGOs are putting any question over the government? No. उस गवर्नमेंट NGO का हक बनता है उस गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे कि आप यहाँ स्कूल क्यों नहीं खुलवा रहे हो. Just put the RTAs about the railway system. You will find a number of unused land in railway. And they are having a lot of crores of property in railway. So why we are not utilizing that particular land for the schools and everything? So I divided the entire campaign in three different parts. First, we tried to develop mobile application. Second, it's a psychological movement in which I am walking 17,000 kilometers. And the third, I'm trying to open a two-room school and a rehab at each and every railway station of India, so that we can channelize the entire India through the railway station itself. The railway station give a lot of revenue to us. Even poverty hurt sakti hai from the railway station. Like within 5 kilometer area, how many beggars we can find? Hardly 30 to 40. And if we talk about the RT, right to education, they are not going to the school. And it is a principal duty to ensure that within 5 kilometer proximity of an area, that every child is going to a school. That's why there is a rule कि 5 किलोमीटर के बच्चे का ही एडमिशन होगा स्कूल के अंदर. बट डू द प्रिंसिपल्स टेक एनी हीट टुवर्ड्स इट? नो. वी आर जस्ट बिजी इन आवर लाइफ. वी आर नॉट थिंकिंग कि उस इग्नोरेंस के कारण ही ये प्रॉब्लम 72 साल से यहाँ तक आ चुकी है. एंड आई डोंट वांट कि मेरी जनरेशन अभी भी इन मुद्दों पे बात करे. आई डोंट इवन वांट टू डिबेट. अगर एक बच्चा भीख मांग रहा है तो मेरे लिए पूरे इंडिया के हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए. अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो हर बच्चा स्कूल जाए, वरना कोई भी बच्चा स्कूल ना जाए. बच्चों का स्कूल नहीं जाने का रीजन ये भी तो है कि उनको अपने माँ बाप को कमा कर देना है, और बहुत सारे बच्चों के पास No. When we go on a deeper side, there are 7 issues like child trafficking. We all know about it. उसके बाद बैगिंग आता है. बैगिंग के अंदर like we have seen on roads, बच्चों को जमीन पर लिटा दिया, बच्चों को गोद में लेकर भीख मंगवाया जा रहा है सीरीट करके. 3 से 6 साल तक के बच्चों को देन सिंडिकेट बैगिंग के अंदर फूड बेचना, फ्लावर्स बेचना, ये तमाम एक्टिविटीज और टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं. हाउ टू कन्विंस समवन, हमारे जबरदस्ती कपड़े पकड़ के लेना, वो शक्लें बनाना, सूटे बनाना. 6 से 9 साल तक के बच्चों को रेक्टिकर्स बनाया जाता है. एंड पूरे इंडिया के अंदर अभी जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं बच्चों को ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं, दे आर दोज किड्स. जस्ट गो टू सिलीगुड़ी, इवन यू विल फाइंड द प्रोसिक्यूशन के लिए दीज किड्स आर यूजिंग. इन बच्चों को सिखाया गया कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से आता है तो हाउ दे हैव टू कन्विंस हिम, कॉल कैसे करनी है, किस तरीके से क्या करना है. 9 से 14 साल तक के बच्चों को जेनेटिक रिसर्च के लिए बेचा जाता है, प्लस इन्हीं बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह यूज किया जाता है. 14 ऑनवर्ड लड़की है तो प्रोसिक्यूशन में डाल दिया, लड़का है तो फुल फ्लेज क्रिमिनल. सो इस पूरी चेन के पीछे 87% माफिया है. और ये पैसा पूरा टैक्स बेनिफिट फ्री है. लाइक जितने भी बैगिंग से पैसा हो रहा है, जितना भी इस तरीके से प्रोसिक्यूशन से पैसा हो रहा है, यू हैव नॉट टू पे एनी टैक्स ओवर इट. सो व्हेन आई वेंट मोर डीपली ओवर इट, वी फाइंड आउट कि एक रेलवे से किन्नर, हैंडीकैप, एडल्ट, दे ऑल यूज्ड टू आस्क मनी एंड ऑल. तो एक ट्रेन से अमूमन 13 से 18 हजार का कमाई होता है एक ट्रेन से. तो अगर पूरा दिन का हम एस्टिमेट लगाते हैं पूरे इंडिया में, तो अरबों पैसों का कारोबार डेली हो रहा है. एंड हु इज पेइंग एनी हीट टुवर्ड्स इट? कोई सोच भी नहीं रहा कि प्रोफेशनल तरीके से इतना तगड़ा कारोबार चल रहा है. तो इस पूरे चेन को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह था कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द बैगर्स, आई शुड टॉक टू द डोनर्स. क्योंकि गलती सोसाइटी कर रही है. वी वर द मेन कल्प्रिट ऑफ सोसाइटी. हम अपने बच्चों को तो 5-5, 10 रुपए भी सोचते हैं, समझते हैं कि वो गलत चीज ना खा लें, बट वाइल वी आर गिविंग समथिंग टू देम, हम लोग वो भी नहीं सोचते हैं. एंड इज द ओनली रीजन कि उन लोगों को ड्रग्स एंड ऑल, दे आर वेरी इजी एक्सेसिबल टू ऑल दिस थिंग्स टू देम. तो पहली चीज ये थी कि इस पूरी रिसर्च करने के बाद कि अगर मुद्दा खत्म करना है तो मुद्दा ही खत्म करना है, जस्ट क्लियर टू द पॉइंट. इसके बीच में कुछ नहीं चाहिए. So far, what has your experience been in the 9,000 plus kilometers that you have covered so far? लोगों ने have they appreciated your work? I face a lot. Like it's like a lot of people. Like if I talk today itself, a 9th class student fight for me to invite me again to her school. So when I went to her school, there were only few students who like एक छोटा सा गैदरिंग किया हमने. And when I went back to her, 2 दिन के बाद अपने स्कूल के प्रिंसिपल से लड़ी है कि पूरे स्कूल को इकट्ठा करके भैया की वो करवाइए. तो like
एक चेंज की अगर मैं बात करता हूँ, पीपल आर शोइंग द चेंज नाउ, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल वन, क्योंकि अमूमन 125 लोगों की एक साइकोलॉजी चेंज करना इट्स वेरी हार्ड थिंग, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेंज द मेंटलिटी, आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक डू एनीथिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मोबाइल एप्लीकेशन अपनी जगह काम करेगी, हमें अपने तरीके से काम करना है। तो हम लोग भीग देते हैं तो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, सो द मेन कल्प्रिट इज वी, नॉट द गवर्नमेंट हियर। बट गवर्नमेंट की स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक लेके आना, हियर गवर्नमेंट इज द फॉल्टर, सो उसके लिए वी हैव मेड द मोबाइल एप्लीकेशन। यू नो व्हाट, लोगों को ये लगता, लोगों को ये लगता होगा कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते, ये बच्चों के लिए एटलीस्ट थोड़ा भीख ही दे दे। But I just like, even a lot of people do ask me this question कि 10 सेकंड की रेड लाइट होती है अगर हम, बट डू यू रियलाइज कि जब आप घर छोड़ते हैं, हम लोग टैप खुला छोड़ देते हैं, हम लोग गेट खुला छोड़ देते हैं, हम लोग फैन ऑफ करना भूल जाते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, द प्लास्टिक बोतल्स रैपर्स गिर रहती हैं। एक बुढ़िया अम्मा पेंशन बनवाने की जो हकदार है 60+, वो भी पेंशन नहीं बनी हुई है, हम उसको भी 2-4 रुपए देकर, गालियां देकर निकल जाते हैं। तो थ्रू आउट द डे हम कितनी जब चीजें देख रहे हैं। एक गाड़ी जो आपके थ्रू से जब निकली है, उसका पोल्यूशन नहीं हो रखा है, उतना पोल्यूशन फैलाती हुई जा रही है। डोंट यू थिंक कि वो हम इन चीजों को इग्नोर करते हुए जा रहे हैं? तो उस 9 सेकंड की जब एक रेड लाइट पर आप रुकते हैं, तो व्हाई यू आर थिंकिंग कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाए, आप उसको भी तो इग्नोर कर सकते हैं। सिंपैथी तो हर चीज के लिए बराबर है ना, आइदर फॉर माय पेरेंट्स, आइदर फॉर योर पेरेंट्स, आइदर फॉर एनीवन पेरेंट्स। बट चीजों को बढ़ावा ना देकर एटलीस्ट इग्नोर इट। तो उस चीज को इग्नोर मार दीजिए, बस बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि आप वक्त बढ़ावा देने का नहीं है। क्योंकि हमारी जनरेशन को जो मुद्दे खत्म होकर मिलने चाहिए थे नहीं मिले, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे सवाल ना पूछे कि दीदी भैया ये मुद्दे आज भी क्यों हैं, आपने किया क्या हमारे लिए। जस्ट गो टू आइजोल राइट नाउ, देयर विल बी टाइम कि आपको अपने हाथ में भोपू लेकर रखना पड़ेगा कि भैया हट जाइए। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, रोड्स आर नॉट गोइंग देयर। हमारी ही नेक्स्ट जनरेशन जो अभी पास आउट होगी, ग्रेजुएट करेगी, इवन मेरी नेक्स्ट बैच की भी जो लोग अभी ग्रेजुएट कर रहे होंगे या आने वाले 2 या 4 साल के बाद, दे विल बी हैविंग गुड सैलरी, वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। गाड़ी खरीदने के लिए आपको रोड चाहिए, और रोड के लिए एक स्मूथ रोड चाहिए। इतना जाम लगता है हर जगह, वो डोंट पे एनी हीट टुवर्ड्स इट, नो वन डूइंग एनी डैम अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मेरी जनरेशन के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो लाइक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली दूसरा क्या कि हम लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। लाइक 1 तारीख को पहला मुद्दा हमारे हाथ में आता है, 30 तारीख तक आते थे 30 मुद्दे हमारे हाथ में होते हैं, और हम लोग इस बात से लड़ रहे होते हैं टिकटॉक पे ऐप, टिकटॉक पे वीडियो किसकी अच्छी बनी है। दिस इज हाउ द यूथ इज, दे आर फाइटिंग कि पिज्जा खाना, ये खाना, वो खाना, बट वी आर नॉट थिंकिंग कि पिछले 72 साल से जो तो तुम्हारा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा कि बच्चा नाली में हाथ डाल के खाना खाता है। आपको वो नहीं दिख रहा कि आज भी अपने ही देश का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो 60+ उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है। तो हु इज गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स? अगर भैया गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस की इंटेंशन है कि वो पैसा ही कमाए, तो लेट देम अर्न द मनी। बट इफ यूथ थिंक दैट इट शुड मेक द इंडिया, तो वो अपने नेशन को इंडिया बनाए। वी डोंट नीड एनी, उनकी क्या है चाहिए हम लोगों को। इफ यू टॉक अबाउट द CSR फंडिंग, जितने CSR फंड अभी पूरा यूटिलाइज हो भी नहीं पा रहा ढंग से, उतना ही तो फंड गवर्नमेंट के पास है। तो ठीक है, आप गवर्नमेंट को मत हेल्प करने दीजिए, पर उस CSR फंड का ढंग से यूटिलाइजेशन तो कराइए, तभी तो 32 लाख NGO कम से कम कुछ काम करें। What fund is this? What fund is this? I didn't get that. CSR is Corporate Social Responsibility Fund. Okay. CSR fund. Yeah. That the NGOs that they get from the companies and all, yeah. Okay. How did you get attracted to AAP, and how has AAP assured you कि वो लोग कुछ It was a very करेंगे? beautiful. It's like when AAP was formed, even I was there, part of like, but this because of the family pressure, I was kept me in between them. But slowly, I get into the media team of AAP, and I'm still handling the Aam Aadmi Party media, and I have learned a lot from the Aam Aadmi Party. So I just say कि I am a product of Aam Aadmi Party. That's why this movement is getting visible on the ground level. So this is the most beautiful thing कि आम आदमी पार्टी से कुछ सीखा है। मैंने केजरीवाल सर से डिटर्मिनेशन सीखा है, मैंने सिसोदिया सर से उनका विजन होना सीखा कि विजन का होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ आप, एंड दिस इज व्हाट आई एम इम्प्लीमेंटिंग नाउ। कि अगर आप मुद्दा खत्म करना चाहते हैं तो मुद्दा ही खत्म कीजिए, बीच में हाँ ना हुजूर जी हुजूर कुछ नहीं होता है। लास्ट आउटपुट शुड बी 100%. दिस इज व्हाट आप हैज टॉट मी। Okay. How do you had mentioned that, by 2019, Delhi mein at least child beggars will be off the streets. How do you plan to do this? अभी इस साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्योंकि मैं तब कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति तब करने की रही है।
So 17,000 kilometers चलने के बाद I'm going to walk barefoot 3,000 kilometers, and that would be that is for other people that my blisters will be in your feet, even if you are just talking miles and miles crore away. ठीक है तो but when you will come to know that still I am like walking for the same thing, so I have to change the psychology of people. अगर मैं साइकिल पे चल रहा होता अभी तो मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता. मैं अगर बाइसाइकिल पे चल रहा होता तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. बट आई एम नॉट आई ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 900 schools, colleges. I just go to school, market, like just give me any place. If I just see anyone, I will just send them a message कि भाई भीख नहीं देना. मैं अगर सिर्फ इस चीज के लिए पैदल चल रहा हूँ कि भीख नहीं देना, क्योंकि 68% क्राइम इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द बैगिंग. तो इस पूरी चेन को डिस्टर्ब करके अगर हम सिर्फ बैगिंग देना बंद कराते हैं तो 68% क्राइम भी खत्म होना शुरू होगा. एंड इवन पुलिस वाले जिनके बारे में कुछ भी सोचता ही नहीं है, उनका जॉब भी 8 घंटे का किया जा सकता है. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन वन थिंग कि आप अपनी तरफ से भीग ना दें. How many states have you covered so far? और तुम पे इस चीज का क्या असर हुआ है? Personally, how has it transformed you walking so many kilometers per day? If I talk about my changes that I have changed, तो हर एक स्टेट की आबो हवा अप्रूव देखी जाती है. लाइक व्हेन आई वाज इन राजस्थान मुझे टॉलरेंस सीखा है, मैंने पेशेंस सीखा है. किसी स्टेट में मैंने स्माइल करना सीखा है. किसी स्टेट ने मुझे स्पिरिचुअली बहुत कुछ दिया है दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस राइट नाउ. किसी स्टेट ने मुझे बहुत कुछ वो चीजें दी है जो हम अमूमन सोच नहीं सकते. तो दिस जर्नी इट इटसेल्फ अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी. लाइक व्हेन आई वाज इन जम्मू कश्मीर आई लर्नड अ लॉट अबाउट लाइक I am in 23rd state right now. I have covered Jammu, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Daman, Silvassa, Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Uttarakhand, UP, Bihar, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and now I'm in West Bengal. So even there's a fact behind it, the way I have covered the path. So first I made a C in a clockwise direction from Jammu Kashmir to Madhya Pradesh, and now I'm going anti-clockwise from Uttarakhand to up to Delhi back. So this is the sign of karmas. How did you plan all this? कैसे तुमको cover करना है, कितने kilometers होंगे? It's just intuitions. It's just intuitions. Like I said, when I went to Lord Krishna Temple in Baki Bihari Vrindavan, I went on 21st June 2017 barefoot. So I tested myself in each and every aspect while I was going there. And when I was sitting in a temple, it was my call, just go for a walk and he will bring a change. Because this entire journey is just depending upon 4 principles: flow concept, courage, patience, and your smile. Rest, you don't need anything in this patience. Like your intuition's power get more and more stronger the more you understand the concept of flow. So this is where my journey is going right now. I don't know where I will stay tomorrow, but I will meet the right person at the right time. It will happen of its own. This is my vibe. So when you try to do something for other people good, so something good start happening to you. So there's a process of manifestation. So I learned all these things. And a number of people do compare me to Swami Vivekananda also and all these people now, but they were the normal human being who walked at that time. So Swami Shankaracharya, Swami Vivekananda, Guru Gobind Singh, Muhammad Paigambbar, Guru Nanak Dev, all the other Gautam Buddha, Mahavir. These people walked at that time with a message. If they can do at that time, why our generation can't do at this time? और उनका तब अगर इतना असर कर सकता है कि आज भी we are following their concept, thoughts and everything, why we can't do at this age? So it is a willpower that you have to do something and something will happen. Okay. Okay, Ashish, you had also mentioned that you have written a book and you have written 150 songs and you have been involved in abstract art. I have composed 141 songs so far, and I just keep doing something and something and something, and I'm a full-time artist now somewhere, and I have applied for a Guinness Book of World Records for the abstract art. And side by side, I have written on Asia's first ballad novel in fiction category, The Wind of a Poet, that is getting published next year. It is a fiction book? It's a work of fiction? It's in fiction category. The entire novel is a 264 page poem, kind of a poetry. But does it? The whole book is a poetry, is it? The book is on a poetry, is it? Yeah, it's in poetry. Yeah, the entire novel is written in a poetry form. Yeah. Does it talk about social evils like begging? No. It is a fiction novel. It's a story of a poet who's having some blessings and all. So some other time, yeah. Ashish bhai, this is Arjun. First of all, appreciate your hard work and effort, right? So the first question that quickly came to my mind was that 17,000 miles, right? What is that number? How did that particular number
came up? What is the math behind that? It could be like For the math, 16,000. It could be 20,000, right? So how was that 17,000 like kilometers? when I started when I came back to my home after working in the Vrindavan, the only thought in my mind was 10,000 kilometers. But I just thought that India is so much big. 10,000 kilometers, like I can cover within 2 or 3 months. Like how a change will come. But then I increased it 13,000. Then Uh-huh. I increased it 17,000. Because 17,000 is like I read somewhere in Vedic that 17,000 kilometers is having some significance in the Vedic. So I put that Mm-hmm. 17,000 kilometers. And one day I was just sitting with my parents and I was like, 3,000 kilometers I will walk for Lord Krishna. And that Okay. journey would be the transformation for you, for the India, not for me. क्योंकि the Got more it. the activity I will do, हम हमारी संस्कृति में ये सिखाया कि जितना आप तप करेंगे उतना लोगों को मिलेगा. So Okay. that's why the Maharishi at that time they used to walk, talk, and teach people, and they had Mm-hmm. that impact. So this is what is happening to me. Like I'm not taking Okay. any permission from any schools, colleges. I'm just randomly visiting them, and they are conducting an assembly in front of me. Even जब 5 मिनट रह जाते स्कूल के, at that time also conducting the student there. So ये तप है जो उन लोगों को इतना convince कर पा रहा है that you should spread the word maximum to maximum people. अगर मैं Got तप नहीं it. करूँगा, then the change will not come. Got Yeah. it. Got it. Are you planning to go down to South India side, or it is all on the north And I'm north side? covering entire India, 29 states and 7 union territories. I'm covering entire India. Entire India. Yeah. The reason why I asked is because I'm from Kerala, and my Okay. dad. Okay, he is secretary of one ashram, which is actually Okay. called Shabri Ashramam, and it was once visited by Mm-hmm. Mahatma Gandhi. Okay, and Okay. the historical importance there is, yes, it was visited by Mahatma Gandhi, and since then, the ashram actually facilitate and give all the needed support for the Dalit, Mm-hmm. family students, right? Even my dad was Okay. a student there when he was studying. Okay, that's the attachment that he has Mm-hmm. there, and he's now, managing that ashram. And there are a lot of students out there, Mm-hmm. mainly from poor background. Okay, so if you ever Mm-hmm. plan to go there, I would, I request you to see if you can stop there at, this ashram. It is in Mm-hmm. Palakkad, and there you will meet a Mm-hmm. lot of poor kids, and then maybe you can talk to them and give your message. That is one thing. And the other question that I have is, right, so did you so far you covered so many kilometers, so did you ever encounter any mafia or anyone opposing your agenda? Because Yeah, I got threat 2 times in between this walk that a truck can over or down you. So but मुझे इन सब चीजों डर नहीं लगा स्टार्टिंग से क्योंकि इट्स आई नो कि ये सब चीजें कहने की होती है एंड दूसरा रीजन ये था कि आई एम वेरी अलर्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस कैंपेन. सो मैं हमेशा रॉन्ग साइड में चलता हूँ. आई डोंट वॉक इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल. आई ऑलवेज वॉक इन अ रॉन्ग डायरेक्शन so that okay, and so that people can see my face. So it's okay. I know threats will come. A lot of the things will come. Even it is not like even I was kidnapped once in a Jabalpur, Madhya Pradesh. It was not for the same thing, mafia and all. But it was some other issue. And 2 times my purse was stolen. So like it's okay. Complaints will come. Like issues will come and everything will come. Even right now I'm having jaundice. But if you have to make something, you will do that anyhow. So complaints ना करे, शिकायतें ना करे मेरी generation. This is what I'm trying to even teach maximum youth कि we should stop making complaints now. We should do it directly. If you will keep making the complaints, a change will never come. So right, these are the right, basic things that I have learned throughout this journey. Yeah. right, Okay, right. Ashish, is this a self-supported journey, or are you being sponsored, funded by somebody? Because money is a big issue. What do you do? It's like कि मैं अपना हक जता रहा हूँ 2 दोस्तों के ऊपर. So my 2 friends are taking care of my financial stuff, and actually it don't cost you so much. And if we talk about my financial stuff, it hardly takes 15 to 20 kilometers in a month.
thousand, 15 to 20,000 kilometers, and 20,000 rupees. And like in evening, like most of the time, it's like if someone do ask me like where you stay, and I just say then कि भैया आपके घर पे रुकेंगे, भाभी के हाथ का हलवा खाएंगे. It's like आपको food भी मिल जाता है, दूसरा वो मिल जाता है. It's like when I stay in a local family, so somewhere I'm getting a personal contact in that state, particular state. So once this movement will get over, I will be having personal contact in 29 states and 7 union territories. It's like tomorrow you are going to do any such issue or something with you. So at least I can give you the access of those contacts. Either it's an IS officer, IPS officer, or these people look like. Okay, what is their response? You did mention yesterday that, IAS officers and IPS officers are very happy to see you. Yeah. So there's a funda like कि अगर मैं खुद IPS officer या if I have gone for the UPSC and all, आप एक particular district दीजिए जाता है that you are controlled by the government only. But right now I'm channelizing the IPS officers in my own way. So what time will come like the way we have planned the things कि 100 IPS officer अगर एक ही बार के अंदर रेड डालते हैं towards the mafia, like he said me, so that is a change in India. अगर एक छोटा सा IPS officer, if you do anything in particular one state, that is not a news. But if 100 IPS officers are doing something, carrying a project continuously or simultaneously all together, that is a change. I think Ashish, you have been doing it for the past 13 months, isn't it? Mm-hmm. Yeah. Okay, and when is the end date that you are planning? It might end in Feb or March, I think. It might. Okay. So could you tell us like how does your day begin with? What exactly happens throughout the day? Like I just woke up around. I have to leave the home around 7:30. So the schools normally open at 8:45 or around 8 onward only. So in between up to 2 p.m. I can cover maximum 5 to 6 schools nearby only. Then I meet the SP and DM of that particular district. So I'm just trying to cover more and more cities only. And if I feel that I should visit at some particular there was a village nearby where I should learn something. So I will definitely go there. And now I'm getting a number of calls like you should come here, you should come here. So I have to keep managing all these things. So I have restricted myself to work only 30 to 40 in a day. And throughout the day, I can easily complete 30 kilometers, hardly take 3 to 4 hours only now. So it's not a big deal to me. But in starting, there was issues. So in morning, I try to eat apples and all these things like if I eat any fruit. Then around 10 o'clock, I just keep continuing my journey. In between, I try to have protas and all. I'm a pure vegetarian. Then by 2 p.m. or 2:30, I just try to meet and cover maximum schools and colleges nearby randomly. I don't know if I'm walking in a different street, so if a school will come there or near. But if I will come across any school, I will just go there randomly. And earlier, I had to face this issue. No schools were allowing me to talk to their schools and colleges. But now I don't face any such issues. Even I just say them, just Google Ashish 17,000 kilometers, and number of articles, news, and a lot come off its own now. So, and somewhere the journey has been covered by the 11 times by the national media. So a lot of people do have a clue that a guy is working for this particular course. So now I don't have to face much issues in all these things. Then around 2, I do have my lunch and all. 2 or in between 2 3. In 4, I try to have a sweet and a chai. 6 p.m. I try to have dry fruits. 8 again mixed veg, dal and roti. This is my daily routine. And throughout the journey, I keep having the liquid, much more liquid all throughout the day. Oh, fantastic. But do you have plans to meet somebody or the other on the way, or you just instinctively or intuitively go to a school or meet people randomly, or do you have plans in advance? No. There's a scientific behind that. If randomly you are meeting people, there's a risk of impact increase 100 times almost. But if you are planning a visit somewhere, the change will not come. But if you randomly meet someone, a change will definitely come. It happened a number of times. When I'm just walking, I just say someone ki मैं 17,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ. Even his bike is going on the road, they will again come back to me. See, 17,000 kilometer a term is itself a very big huge thing. Okay. So it's like that. और दूसरा कि अगर मैं लिखकर चीज लाके लेके आने की सोचता और social, a lot of people do make a complaint to me why you are not using social media in a very bigger platform on a bigger scale. So I will कि अगर लिखकर चीज आता तो लोग tobacco, smoke, drink करना छोड़ चुके होते. क्योंकि हमारा यूथ
पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उस पर लिखा रहता है कि वी आर गोइंग टू किल यू, एंड हाउ मेनी ऑफ यूथ लाइक यूज ड्रिंक स्मोक ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अब जो चेंज आना चाहिए वो कहकर आना चाहिए। सो जस्ट वांट टू मेक माई इंडिया की 1 करोड़ लोग डेली पैदल चल रहे हो, वो 1 करोड़ लोग 10 लोगों से मिल रहे हो, एंड टाइम विल कम कि 10-20 करोड़ लोगों तक आपका मैसेज कहकर जा रहा है। सो वी आर नॉट फॉलोइंग अ फैमिली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अभी तो कोई बात करके राजी नहीं कोई एक दूसरे से। Ashish, I don't know if I missed that part, but you mentioned that you mainly go to the schools, right, and talk to the students. No, no, right? no. I go schools, college, bus, metro station, airports, railway stations. If I go anywhere, I will make an announcement. Like few days back, I covered entire Howrah railway station. Yeah, but my experience is that if you go to temples, right, you will right away see a lot of kids out there. Is that something that is also in your plan? Because in South India, no, it's more, like it's more over like I'm working for the child beggars, but I'm talking to the donors. So there's a fact that if I keep talking to the beggars quantity will get increasing. But if the Indians stop giving them arms and money in one go, then even in next 100 generations there will be no beggar. So गलती society कर रहा है, the गलती is not from the beggar. So like people have changed their mentality. So even we have thought the solution for this कि I'm trying to कि हम लोग एक account ऐसा खोल दें कि आपको किसी like just frankly speaking, like अभी केरला के अंदर बाढ़ आया, कितने मंदिरों ने वहाँ पे पैसा दिया है, कितने मंदिरों ने पैसा दिया है। यार हम मर रहे हैं, हम करते हैं, वो पैसा हमारा है, मंदिर से निकालो बाहर। Only again the institute, the people, they had to come forward कि मंदिर पैसा नहीं है, क्योंकि हर मंदिर, हर चर्च, हर एक चीज तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ना। They're having an NGO behind them. But we are not thinking जब हमें जरूरत होती है, they are not there to help us. उस टाइम पे भी आप भगवान आपकी सुनेगा, उस टाइम पे भगवान सुनेगा। तो इन बिटवीन जो पैसा जा रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है? टाइम तो वो था कि आधा पैसा पूरे हर एक बैंक को, हर एक मंदिर को निकाल के रख देना चाहिए था, भाई यूज करो। बट वेयर इज दैट मनी स्टिल? इफ यू टॉक अबाउट केरला, नागालैंड, टॉक अबाउट असम, लाइक वेयर इज दैट मनी राइट नाउ? वो पैसा हमने तो दिया उस मंदिरों में इसलिए ताकि वो अगर जरूरत पड़े तो दे कैन गिव दैट टू अस, बट व्हाई दैट मनी इज नॉट गेटिंग यूज्ड? द सेम वे हम जिन पंडितों को दान दे रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं, दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर द एजुकेशन। तो अब हम ऐसा एक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जैसे सैनिकों के लिए अकाउंट होता है, एक अकाउंट सिर्फ एजुकेशन है, जिसको जितनी डोनेशन दी है उस अकाउंट में दे, और वो जितने प्रोजेक्ट उनके एग्जीक्यूट होने हैं वो बिना टेंडर प्रोसेस के एग्जीक्यूट हो। तो इवन इस चीज का भी मैंने ध्यान रखा है कि बिल्डिंग, द वे वी कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इज रेलवे स्टेशन, उस बिल्डिंग का बनाने का भी तरीका होगा। वी आर नॉट गोइंग टू लाइक कि हम गवर्नमेंट से काम, गवर्नमेंट तो बस देखे ये काम इस तरीके से होना है। वी आर नॉट आस्किंग यू एनी हेल्प, वी आर जस्ट आस्किंग कि मेरे देश का बच्चा स्कूल जाना चाहिए और नहीं जा रहा तो इट इज योर लायबिलिटी। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, sir. Ashish, how do you keep yourself motivated? क्योंकि हमारे देश में ना कुछ भी चीज जल्दी नहीं होता है. The process is very slow. Actually, na, I said since I said it's a spiritual journey. So like when I was in Madhya Pradesh, I was like मैं 6 घंटे I was like through that एक बाबा ने मुझे वहाँ पे किडनैप कर लिया था, and somehow I escaped there from like northeast, पर somehow I ran away from there. And the same day I cried for 6 hours continuously. And next day, like the same day, I walked 12 kilometers. तो उस दिन I realized कि यार इस पूरी जर्नी के बीच में ना तो तुझे कोई इंस्पायर करने वाला, क्योंकि every day, every morning, if anything bad happens to me, I have to say myself, भाई तू जो छोड़ के आया, तू परिवार छोड़ के आया, if you will not do, who will do? No one is going to do for you, क्योंकि it's your vision. मुझसे किसी ने नहीं बोला था जॉब छोड़ दे, मुझसे किसी ने नहीं बोला था कि just try to work only. No one said me you want to make significant. This was my vision, my choice. So how can I make a complaint? तो ना तो इस थ्रू द जर्नी मैंने किसी को तोड़ने का हक दिया खुद को, और ना मैंने किसी को इंस्पायर करने का हक दिया। तो इट्स अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट, और यही हमारे वेद उपन्यास ये सब चीज की सेल्फ लव शुड बी देयर इफ यू वांट टू डू समथिंग बिगर इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव, दे वर सेल्फ obsessed with themselves. If they want to bring a change, they will bring a change. I am extremely impressed by your clarity. There is no confusion anywhere. I think you're able to achieve so much in so little time is because you're very, very focused. It's amazing how much clarity you have. A lot of people would achieve a lot also if they had this kind of clarity, which they don't have. But how do you get it? How do you get that clarity?
इट्स लाइक कि हम मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट नीड एनी फेम फ्रॉम दिस, आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम दिस. अगर मेरे देश का बच्चा स्कूल जाने लाइक डोंट लॉट ऑफ पीपल डू आस्क मी यार तुम्हें क्या मिल रहा है इससे. लाइक पीपल थिंक कि मुझे करोड़ों पैसा मिल रहा है. भाई अकाउंट में 5-5 रुपए भी नहीं पड़ा होता. आई हैव सीन दैट फेस इन थ्रू दिस जर्नी. बट पीपल लाइक बट मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये चीज मिल रही है कि मेरे देश का बच्चा स्कूल जा रहा है यार. कम से कम कोई फॉरनर आके मेरे देश को ये नहीं बोले कि इस देश के अंदर बच्चे भीख मांगते हैं. कम से कम किसी बच्चे को माँ ये नहीं कहेगी कि हर साल 5,000 मतलब हर साल 5 लाख बच्चे किडनैप होते हैं, जिसमें 60,000 के लगभग बच्चे ऐसे हैं कि थ्रू ये गवर्नमेंट आता है कि बच्चे वापस अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाते. एक्चुअली एक मुहिम के बाद अगर वो 60,000 बच्चे जो अपने माँ बाप की शक्ल देख पा रहे हैं, मुझे मेरे लिए ये मिल रहा है. क्योंकि आई हैव लर्न कि पैसे के पीछे भागना ये लाइक नहीं है. मैं अगर आज 2 शॉर्ट 1 टी-शर्ट पहन के चल रहा हूँ, दिस इज इनफ फॉर मी. लाइक दिस इज द चेंज आई गॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी कि हमारे देश का बच्चा बेहद भूखा सो रहा है और एक तरफ हमारी यूथ का एक मतलब इसलिए कि फेसबुक पर सिगरेट पीते हो तुम कुछ लिख रहे हो एंड यूथ इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. अगर आज पूरा इंडिया का यूथ स्मोक ना करे एक दिन, यार गवर्नमेंट का कितना बड़ा नुकसान है. तुम भारत बंद कर दो, तुम दिन के नहीं सोचते कि एक दिन के लिए दारू नशा ये सब चीजें नहीं करनी है. उससे कितना रेवेन्यू का लॉस होगा गवर्नमेंट का. तो भारत बंद करने से नुकसान नहीं है भारत का, वो नुकसान तो लोगों का ही होता है. लोगों को इतना पागल बना दिया जाता है कि इसके गवर्नमेंट का नुकसान है. गवर्नमेंट का नुकसान तब सबसे ज्यादा जब आज का यूथ एक दिन के लिए दारू ना पिए, स्मोक ना करे. तो दिस इज हाउ वी कैन लाइक टेक अ रिवेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर आपको रिवेंज लेना है तो एक हफ्ते दारू मत पियो भाई. But not everybody, again, लोगों में वो सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही नहीं. दारू नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे? तो वो डिसिप्लिन उनमें है ही नहीं, यू नो. मैं कल की बात बताता हूँ तुम्हें. लाइक आई वाज एट भूतनाथ मंदिर, देयर इज अ टेंपल नियर बाय इन कोलकाता. सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम नॉर्मली द वे आई डू टॉक. सो एक बंदे ने सिगरेट की डिब्बी मेरे सामने निकाली, पैरों के नीचे क्रैश की. ही हग्ड मी, ही क्राइड मी एंड ही सेड ही लेफ्ट द सिगरेट. तो ये आपका तप है. अगर यही बात है, मैं एक तख्ता लेके जाऊं, 4 मीडिया वाले वहां पे लेके जाऊं, एक जैसे एक एनजीओ इवेंट कर रहे हैं आजकल, उसको मैं बोलूं कि इस तरीके से कर भाई, कोई स्मोक नहीं छोड़ने वाला है. क्योंकि आप उसको कहने के लायक नहीं हो ना. आज अगर मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेरा हक बनता है कहने का. मेरा हक बनता है कि मैं अगर स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं किसी को भी रास्ते में टोक दूं, मेरा हक बनता है. Tell us a little about your parents. Did they instill all these values in you as a child? No, initially, if I frankly speak, initially पिटाई हुई है घर पे. Initially पिटाई हुई, like आप 45,000 पे हर महीने हाथ में आ रहे हो, ऐसी जॉब छोड़ने वाले हैं. तो obviously anyone parents would like कि पढ़ाया लिखा है, हर चीज कर दी. But somehow I convinced them, and now they are in full support of me. And अभी मेरी मम्मी अभी कलकत्ता आई थी, तो पहला इंटरव्यू मैंने उनको रेड एफएम में दिलाया. तो she was like very happy. वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि कम से कम वो अपने एक बच्चे को कुर्बान कर रही है अपने देश के लिए. और इसकी इस मुहिम के बाद मेरे देश का हर एक बच्चा स्कूल जाएगा जो होगा. दिस वाज माय मदर कॉन्फिडेंस. What do the rest of your family स्टार्टिंग से पता है, फ्रेंड्स दे नो फ्रॉम स्टार्टिंग आई मैड अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड दे नो दे डिडंट हैव एनी ऑप्शन एंड स्टिल दे आर लाइक कि तू कर लेगा. दे नेवर सेड मी ये चीज नहीं हो सकती. दे सेड कि पागल है तो कर लेगा. सो आई जस्ट स्माइल कि दे नो ओके आई विल डू दैट डेफिनेटली. What about your family and relatives? And earlier, my relatives were against of it, like कि उनको like कि स्कूल में टॉप कर रहा है, मार्क्स अच्छे लेके आए हमेशा, तो ये क्या पागलों वाला रीजन एकदम से ले रहा है. बट राइट नाउ एवरीवन इज कन्विंस्ड क्योंकि यही तो लाइफ है कि अपना ये कुछ नहीं करना, ये तो लाइफ है. थ्रू द 8 घंटे आप अपने लिए कुर्सी पर बैठे रहते हैं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं. एट लीस्ट लाइक अ फ्री बर्ड आई एम गिविंग समथिंग टू माई इंडिया एंड आई से माई सेल्फ प्राउडली. अब वक्त मेरी जनरेशन का, हम प्रकृति को उसकी चीजें लौटाएं एंड दिस इज व्हाट आवर जनरेशन विल डू. क्योंकि हम लोग लास्ट जनरेशन में नदियां देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं. इस जनरेशन के बाद शायद हम लोग चीजें ना देख पाए. इवन ऐसे कि 3 साल के बाद हमारी जनरेशन शायद रोड की शक्ल भी नहीं देख पाएगी. दिस इज गोइंग टू हैपन. कोई बड़ी बात नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रही है. नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस. आज भी हिंदू मुस्लिम दलित, यार बड़े हो जाओ यार. ये हिंदू मुस्लिम दलित कहाँ से आ जाता है बार बार बीच में? बेसिक मुद्दा है कि मेरे देश का बच्चा भूखा मर रहा है. बेसिक मुद्दा है कि वो अम्मा जो पेंशन की हकदार है उसकी पेंशन ही नहीं बन रही है. ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को बना रहे हैं? मेरे दादा या इवन माय फादर लाइक मैं 54 इयर्स ओल्ड, वो स्टिल आज भी पेड़ पौधे लगा के खुश हो जाते हैं. 54 साल तक वही लगाते हैं. लाइक वाई आर नॉट थिंकिंग कि दिल्ली के अंदर एक ही बार के अंदर ऐसा पर्यावरण दिवस बना दिया जाए कि आने वाली 100 जनरेशन को पेड़ पौधे लगाने की जरूरत न पड़े. वाई आर नॉट मैग्नीफाइंग द रीजन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम सब लोगों को इकट्ठा करके चीज ऐसी करा दें कि भाई खत्म करो भाई मुद्दा.
ये तो चीज स्कूल में टीचर ने सिखाई थी, होमवर्क खत्म करो, घूमने जा सकते हो, स्कूल में जा सकते हो, खेलने जा सकते हो। पेरेंट्स भी हमेशा यही सिखाते थे कि होमवर्क पूरा करो, घूमने चले जाओ। यार आप ऐसा क्यों नहीं करे कि मुद्दे खत्म कर दो देश के अंदर से, उसके बाद घूमने चले जाओ। ये वाह। बचपन की लड़ाई है, और ये मैं क्लियरली मेंशन करके कहता हूँ कि ये बचपन की लड़ाई आने वाला बचपन ही लड़ेगा, ताकि बचपन खुश है मेरे देश का। वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम द 40+ पीपल। भाई आप घर पे बैठो, अगर आपको कुछ करना होता देश के लिए या कुछ इस तरीके से, तो आप लोग मुद्दे खत्म करने की सोचते हैं। भाई मेड आवर मेंटेलिटी सच है कि मुद्दों को कंट्रोल किया जाए, उनको खत्म करने की ना सोची जाए। आज भी 72 साल के बाद भी यूथ आर कंप्लेनिंग कि मुद्दे को या थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, कंट्रोल। वो ये क्यों नहीं बोलते कि मुद्दा खत्म कर दो। कितनी सारी कंट्रीज हमारे बाद बनी है, उसके बाद भी दे आर हैविंग अ मच बेटर एजुकेशन सिस्टम। और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं एक नाली बनवाने के लिए, एक रोड बनवाने के लिए। तो बेहतर है कि पहले 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक सपने पे आए हैं। अगर आज 125 करोड़ हिंदुस्तानी ये सोच सकते कि हर बच्चा स्कूल जाए, तो हर बच्चा स्कूल हो अगले सुबह, बट वो 125 करोड़ हिंदुस्तानी कहाँ भटके हुए हैं। तो उन लोगों को एक मार्ग पर लेके आने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चाहे धूप हो, बारिश हो, जो मर्जी हो। दिस इज द मेंटलिटी ऑफ इंडिया। जब आप सेक्रीफाइस करते हो देन दे स्टार्ट फॉलोइंग यू, मतलब कोई आपके पीछे नहीं भागता है, आपकी सोच की कोई परवाह नहीं करता है, आई डोंट थिंकिंग गुड और बैड। मैं कल तक दिल्ली के अंदर ही I used to talk in metro directly. Like a number of things happen in Delhi also. Like चीजें की जा सकती है, और दिल्ली के अंदर मैं एक बार में स्टार्ट करता है, इवन a lot of friends ask me why you didn't start in Delhi. भाई मॉम डैड किसी के भी अपने बच्चे के पैरों में पेन नहीं देख सकते। 10 बजने के बाद मॉम डैड का फोन आना शुरू हो जाता है, इवन अभी कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही होती, एंड मॉम इज लाइक फोन काट दे भाई, किससे बात कर रहा है। ये होता है दिल्ली के अंदर। बट राइट नाउ सिंस आई एम नॉट इन दिल्ली, बट दिल्ली वुड बी द फर्स्ट स्टेट दैट वुड बी 100% चाइल्ड बैगिंग फ्री ऑफ स्पीकिंग। ये मेरा वादा है, खुद से कमिटमेंट किया हुआ है। एंड आफ्टर दिल्ली मैं मनीष सिसोदिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि 29 स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाइए दिल्ली के अंदर, उनको बताइए ये मॉड्यूल बनाए हैं हमारी दिल्ली के लोगों ने, और इसका ये आउटपुट आया है। अब आपके स्टेट में जाने से पहले आउटपुट वो कर दीजिए, क्योंकि यही कलाम सर का विजन था कि 2020 तक वो स्कूल में जाए हर बच्चा देश का। तो कलाम सर आज हमारे बीच में है या नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी पीढ़ी फिर भी हर बच्चे को स्कूल भेजे, ये है कलाम सर का विजन। किसी की अस्थियां हर एक स्टेट में बहाने से कुछ नहीं होता सर। शिक्षा अभियान ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए था, ये असली ट्रिब्यूट होती है उनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। लाइक वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। और इफ आई टॉक मोर फ्रैंकली, मतलब इन माई 23 स्टेट जर्नी, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देश का झंडा पकड़ते हुए नहीं देखा, सीरियसली। ओके। आप कहते हो भारत बंद है, यू आर होल्डिंग योर पार्टी फ्लैग, भाई मेरे देश का झंडा कहाँ है। इतने बड़े बड़े इवेंट देखे मैंने, एक नेशनल फ्लैग तक नहीं होता वहां पे। So there is a real patriotism. So I'm making even another request to the entire youth, भाई झंडा लेके चलो अपने हाथ में। वो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि वी आर होल्डिंग इंडियन नेशनल फ्लैग। दिस इज आवर टाइम नाउ, वी शो द रियल पेट्रियोटिज्म। So making a request to people कि आप 2 किलोमीटर डेली पैदल चलो विद द नेशनल फ्लैग एंड टीच दिस पॉलिटिकल पार्टीज, भाई ये है पार्टी, इंडिया से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। देन व्हाई यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ कि आप बाप बन गए इंडिया के, आप इस तरीके से गुंडाइज्म दिखाना, ही सारी चीजें करना, इट हैपनिंग। एक 2 साल का बच्चा भी फ्लैग पकड़ के चले मॉर्निंग वॉक पे, और एक 80 साल का बूढ़ा भी फ्लैग पकड़ के चले, बट मैसेज भी भीख नहीं देने हाथ से, देन अ चेंज विल कम। तुम्हारे पास कंधे पर क्या होता है व्हेन यू आर वॉकिंग, हाउ डू यू कैरी चेंज ऑफ क्लोथ्स, बेसिक टॉयलेटरी आइटम्स, कैसे मैनेज करते हो ये सब? It's a willpower. Like I said, like when I was in Jammu Kashmir, there was a thought like यार I was just hell shattered, मैं टूट चुका हूँ, and I was like मैं घर पे रो नहीं सकता क्योंकि I mean that phase of my life मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर चुका हूँ, अपने माँ बाप के भी सामने रो नहीं सकता, if I will cry they will cry, so I have to be like very optimistic to my mom and dad always कि भैया कुछ भी नहीं हुआ है, कि यहाँ पे मैं रो रहा हूँ आराम से, but my voice should be very louder, मेरी माँ को हल्का से भी पता नहीं चले। एंड थ्रू दिस जर्नी लाइक कि व्हेन आई वॉक एंड ऑल, जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा यार देश के ऊपर इतना वजन है, तो यार 27 किलो का वजन या 24 किलो का वजन लाके चल नहीं सकता है। दिस वाज हाउ आई टॉक टू माई सेल्फ, देश के ऊपर सीरियसली इतना वजन है पर हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी नदियां होने के बाद भी पीपल आर नॉट हैविंग वाटर देयर। दिस गो टू अगरतला, मिजोरम, ईटानगर, दिस स्टेट्स, वहाँ पे पानी है पर पानी की इतनी कमी है, किल्लत है, दे नॉट हैविंग एनी प्रॉपर सिस्टम। देयर वाज अ स्कूल इन हिमाचल प्रदेश जिसके अंदर सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 टीचर्स हैं वहाँ पे। उन 4 टीचर को श्रम के मारी होना चाहिए, तो हम 2 बच्चों का तबादला कहीं और कराएं और वहाँ पे पढ़ाना, बट तनख्वाह आ रही है फ्री में, क्योंकि हम लोग क्या हो गए ना, एक जॉब मिलती है गलती से, उस जॉब को बचाने के चक्कर में हजारों झूठ बोलते हैं।
ये नहीं सोचता कि जॉब का पैसा ढंग से यूटिलाइज हो नहीं हो, क्योंकि हमारा जमीर मर गया है। ओके तो जब मैं पैदल चल रहा हूँ, अगर मैं किसी से चौड़े में बात कर रहा हूँ चीजें, तो मैं उसके जमीर को हट कर रहा हूँ। इवन नेट द गवर्नर ऑफ नागालैंड 2 days बैक, तो आई जस्ट सेड कि सर मैं लिखकर आपको इसलिए कुछ नहीं देना चाहता क्योंकि लिखने से चेंज नहीं आता है। कितने सारे मेमोरेंडम, कितनी सारी पेटिशन हर साल डाली जाती है, सब कुछ पेपर लोस्ट, ये लोस्ट, वो लोस्ट, लिंगाना, उसके बावजूद भी लाइक कितने सारे स्कीम्स एनजीओ काम करेगी, सिगरेट छोड़ दो भाई। और गवर्नमेंट भी कितना काम करती है, गवर्नमेंट खुद ही सीट बनाती है, खुद ही कंट्रोल करने की बात करती है, खुद ही फिर बंद कराने के लिए पैसा लगाएगी। तो गवर्नमेंट तो तीनों तरीके से पैसा कमा रही है। तो अब जो चेंज आएगा वो क्या कर आएगा? तो देर विल बी एक टाइम, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो 5 साल के अंदर आई विल मेक माई इंडिया की। अगर कल को तुम मुझे वहां से फोन मुझे बोल रहे हो कि आशीष आज का स्लोगन ये है, तो 30 करोड़ यूथ एक साथ वो बोले अपने घरों में बैठकर। तो अगली बार से जब निर्भया कांड होगा तो किसी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है। 30 करोड़ यूथ अपने घरों से जब बोलेंगे तो वो आवाज हर जगह जाएगी। दैट शुड हैपन नाउ। ओके, कितने लोग जुड़े हैं तुम्हारे साथ अभी इस अभियान के बाद? जुड़ने की बहुत लोग जुड़े हैं। एंड मतलब एक नेचुरल साथ में चलना मेरा के चलने के खुद के कुछ अलग कारण है, क्योंकि इफ वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर तो हो सकता है मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच ना करूँ। लाइक मुझे जॉन्डिस है, मैं फिर भी चल रहा हूँ, लेकिन से मैं पागल हूँ। बट अगर तुम्हें फीवर हो गया गलती से और तुम नहीं चली तो इस मोमेंट की लग जाएगी सर। तो आई हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। दूसरा, रात को चलते हुए रास्ते में तो कोई भी पूछ लेता है कि तुम कहाँ रुकोगे, आई कैन इजिली गो टू देयर होम। बट अगर 2 या 3 लोग साथ चल रहे हैं, लोगों को सोचना पड़ेगा तो घर उठा के ना भाग जाए। No. I am talking not just with walking, other issues also. Like, have they offered you their help, their support, their money, their power, वैसे? किसी से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आई डोंट इवन आस्क एनीवन एनी सपोर्ट। और इफ आई टॉक अबाउट दिस पूरी मूवमेंट से क्या एक मतलब वैसे अगर कुछ हुआ है तो फेसबुक से काफी हेल्प मिल जाती है। एंड मेरे फोन की मैं कॉन्टेक्ट की बात है, 10,500 से ऊपर फोन में कॉन्टेक्ट है। 28 करोड़ का सोशल मीडिया रीच हो रहा है इसका। लाइक more than 750 articles have been published about this campaign and all these things, and धीरे-धीरे it is getting more and more and more. और लोग कितने जुड़े हैं तो next week once my report will come out on this, 135 किलोमीटर चलने वाला हूँ in a day. After this, I will make an announcement in entire India कि जिन लोगों को अब sport चाहिए, they can just come out of their home. So with the national flag, you can see the people all around you. Okay. आपको थोड़े दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, you can see that. Yeah. Okay. You had also mentioned that in Delhi you plan to have a marathon run to raise. Yeah, on 14 June, I'm trying to conduct a marathon. I mean 10 lakh people in a marathon, but since capacity वहाँ पे ज़्यादा नहीं, तो I'm trying कि 2-2.5 लाख लोग तो वहाँ पे जुड़ेंगे। For sure, this is going to happen. ये हमारे जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, इवन वहाँ पे 50-60 हजार लोग बड़े प्यार से आते हैं, जो हम लोग बिना प्रिपरेशन करते हैं। लाइक वी हैव कंडक्टेड लॉट ऑफ मैराथन्स इन दिल्ली, तो नाउ तो कुछ और ही अलग लेवल पे जा चुके हैं हम लोग। तो फॉर श्योर पीपल विल कम देयर। लाइक बालाघाट के अंदर एक बताता हूँ, बालाघाट के अंदर एक लड़का है छोटा सा, सेकंड ईयर राइट नाउ, एंड वो मुझे हमेशा हर महीने फोन करके बोलते भैया बस लेके आना है मुझे बस। तो दिस इज इम्पैक्ट। उसकी अम्मी मुझे हमेशा पूछती हाल चाल क्या है। लाइक एक दिन मुझे घर पे खाना है, तो दिस इज इम्पैक्ट कि लोग आज भी जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढाबे के अंदर मैंने खाना खाया था सेकंड डे, उस ढाबे वाले का आज भी फोन आता है। किसी चने वाले ने चने लिए थे, उसका आज भी फोन है। तो लाइक पैदल चलते हुए मुझे तो सारे बेनिफिट मिले, क्योंकि वर्क उसी को मिला के मिलता है कि आप पूरे समाज को साथ लेके चल रहे हो। आई एम मीटिंग एवरीवन, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, एवरीवन। कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई चने वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई साइकिल पे जाने वाला है, कोई मर्सिडीज में बैठने वाला है। मैं हर क्लास से मिल रहा हूँ। यही वर्ग मिलकर इंडिया को इंडिया बनाता है। तो अगर मैं सोचूं कि बच्चों से बात करके चीज नहीं आएगा, अगर मैं सोचूं कि ब्यूरोक्रेट से मिल जाए चीज नहीं आएगा। आई हैव टू कीप इट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। Ashish, you're the biggest ambassador for आम आदमी पार्टी, तो इस वजह से बाकी पार्टी का रवैया कैसे होता है तुम्हारी तरफ, कांग्रेस का और बीजेपी का? ऐसा मतलब पॉलिटिकल ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर इंडिया, भाई इंडिया के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी का कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। उस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, तो आई एम लॉयल एंड ऑनेस्ट टू दैट आम आदमी पार्टी। बट इट डजंट मीन कि मैं अपने इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। In starting, there were certain reason कि people were like कि आम आदमी पार्टी से कुछ मिल रहा हो, शायद ऐसा कुछ कर रहा हो, इसलिए कुछ कर रहा हूँ। एंड आई ऑलरेडी मेट मोहन भागवत जी से मिला हूँ, मैं बहुत सारे बीजेपी के सीएम से मिला हूँ, गवर्नर से मिला हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया एक है, बात खत्म वहाँ पे, दैट्स इट। मोहन भागवत का क्या रिएक्शन? ये चीज आरएसएस वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले में। मतलब काफी हेल्प की उन्होंने, और पूरा नंबर भी दिया था उन्होंने कि इन केस इफ यू फील एनी हेल्प तो वो हेल्प तुम्हें मिल जाएगी।
और हेल्प की ऐसे कुछ जरूरत पड़ी नहीं है, बट ही इज वेरी हम्बल उस तरीके से. बट एक वो होता है कि तुम किस मुद्दे पे बात करके हम्बल होते हैं हम लोग, तो उस मुद्दे पे लेके बात करके वो ही वॉज वेरी हम्बल टू मी. If you need any help in this campaign, he will be there. Yeah, Ashish, at this time, immediately, like, are you looking for any help and support from anybody, like, from us or anybody else? Yeah, from your side, I just want to spread, help in spreading more and more words. And like, if you can help in that, हम लोग इंटरनेशनल मीडिया को भी इसको, a lot of people from another countries have started the same concept, walking and talking. So we can take this concept more further that UN से लेकर like United Nations, it can get into this movement, like UN bodies. So UNICEF हो गया, like they are doing a lot, but उनका पैसा भी तो वेस्ट हो रहा है ना, like इतना फंड आ रहा है हमारी कंट्री में, वेस्ट फंड इज गोइंग. So if मेरे जैसा कोई लड़का इतना पैसा भी यूज नहीं कर रहा, like हम एक इवेंट करते हैं इन अ मंथ, उस पर 30,000 रुपए 3 लाख रुपए लगा देते हैं, लाइक यूनिसेफ, ये बड़े बड़े एनजीओ. मैं और इस इवेंट के अंदर हार्डली 2 से 3 लोग आते हैं, और आप पूरे साल उसी का गाना गाते रहते हो. मैं डेली 3 से 4 हजार लोगों से मिल रहा हूँ. मेरा डाइट का खर्चा 700 रुपये है, और 500 रुपये में रहने मेरे को मान के चलता हूँ. तो उस पूरे 700 रुपये के अंदर अगर मैं 3 से 4 हजार लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरा इवेंट इज मच मच बिगर. तो अगर यूनिसेफ उस फंडिंग को थोड़ा सा ढंग से मुझे चैनलाइज करने दे, तो मैं भी, मेरे जैसे जितने लोग हैं या इधर अदर इश्यूज इस तरीके से, आई कैन गिव देम मच बेटर रिजल्ट. आई नो कि टीम बढ़ रही है, मेरे पर प्रेशर भी बढ़ रहा है डे बाय डे. ये अभी कल का रूटीन बनाना है, आई टू राइट माय डेली एंट्री. तो आई वाज लुकिंग कि कुछ ऐसी अगर टीम हम बनाते हैं, क्योंकि अगर 10 लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो मतलब अपने स्वार्थ को छोड़ के देश में करना चाहते हैं, हमें सिर्फ वो 10 लोग चाहिए होते हैं देश बदलने के लिए. तो मैं सिर्फ वो 10 लोग ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तो कुछ नहीं चाहिए. Fantastic. तो लाइक अगर वो लोग मिलते हैं, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. Tremendous effort, really appreciate. Very energetic it seems, and enthusiastic. So, yep, keep going, and we will follow you. आपके चक्कर में 3.5 किलोमीटर चल लिया हूँ. क्या? I walked just 3.3 किलोमीटर में फिर चला हूँ अभी, स्कूल की बात करते. Fantastic having you on our show, Ashish, and yes, definitely we'll be in touch. शुक्रिया. Yeah, Thanks a lot. Take care. Bye. Jai Hind. Take care. Take care.